To every New Yorker in Kensington and Midwood and Hunts Point, know this. This city is your city, and this democracy is yours too. This campaign is about people like Wesley, an $11.99 organizer I met outside of Elmhurst Hospital on Thursday night. A New Yorker who lives elsewhere, who commutes 2 hours each way from Pennsylvania because rent is too expensive in this city. It's about people like the woman I met on the BX 33 years ago, who said to me, I used to love New York, but now it's just where I live. And it's about people like Richard, the taxi driver I went on a 15-day hunger strike with outside of City Hall, who still has to drive his cab 7 days a week. My brother, we are in City Hall now. This victory is for all of them. And it's for all of you. The more than 100,000 volunteers who built this campaign into an unstoppable force. Because of you, we will make this city one that working people can love and live in again. With every door knocked, every petition signature earned, and every hard-earned conversation, you eroded the cynicism that has come to define our politics. Now I know that I have asked for much from you over this last year. Time and again, you have answered my calls. But I have one final request. New York City, breathe this moment in. We have held our breath for longer than we know. We have held it in anticipation of defeat. Held it because the air has been knocked out of our lungs too many times to count. Held it because we cannot afford to exhale. Thanks to all of those who sacrificed so much, we are breathing in the air of a city that has been reborn. To my campaign team, who believed when no one else did, and who took an electoral project and turned it into so much more, I will never be able to express the depth of my gratitude. You can sleep now. To my parents, Mama and Baba, you have made me into the man I am today. I am so proud to be your son. And to my incredible wife, Rama, Hayati, there is no one I would rather have by my side in this moment and in every moment. To every New Yorker, whether you voted for me, for one of my opponents, or felt too disappointed by politics to vote at all, thank you for the opportunity to prove myself worthy of your trust. I will wake each morning with a singular purpose: to make this city better for you than it was the day before. There are many who thought this day would never come, who feared that we would be condemned only to a future of less, with every election consigning us simply to more of the same. And there are others who see politics today as too cruel for the flame of hope to still burn. New York, we have answered those fears. Tonight we have spoken in a clear voice. Hope is alive. Hope is a decision that tens of thousands
of New Yorkers made day after day, volunteer shift after volunteer shift, despite attack ad after attack ad. More than 1 million of us stood in our churches, in gymnasiums, in community centers, as we filled in the ledger of democracy. And while we cast our ballots alone, we chose hope together. Hope over tyranny. Hope over big money and small ideas. Hope over despair. We won because New Yorkers allowed themselves to hope that the impossible could be made possible. And we won because we insisted that no longer would politics be something that is done to us. Now it is something that we do. Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. So let us speak now with clarity and conviction that cannot be misunderstood about what this new age will deliver and for whom. This will be an age where New Yorkers expect from their leaders a bold vision of what we will achieve, rather than a list of excuses for what we are too timid to attempt. Central to that vision will be the most ambitious agenda to tackle the cost of living crisis that this city has seen since the days of Figueroa LaGuardia. An agenda that will freeze the rents for more than 2 million rent-stabilized tenants. Make buses fast and free. And deliver universal child care across our city. Years from now, may our only regret be that this day took so long to come. This new age will be one of relentless improvement. We will hire thousands more teachers. We will cut waste from a bloated bureaucracy. We will work tirelessly to make lights shine again in the hallways of NYCHA developments where they have long flickered. Safety and justice will go hand in hand as we work with police officers to reduce crime and create a department of community safety that tackles the mental health crisis and homelessness crises head on. Excellence will become the expectation across government, not the exception. In this new age we make for ourselves, we will refuse to allow those who traffic in division and hate to pit us against one another. In this moment of political darkness, New York will be the light. Here, we believe in standing up for those we love. Whether you are an immigrant, a member of the trans community, one of the many black women that Donald Trump has fired from a federal job, a single mom still waiting for the cost of groceries to go down, or anyone else with their back against the wall, your struggle is ours too. And we will build a city hall that stands steadfast alongside Jewish New Yorkers and does not waver in the fight against the scourge of anti-Semitism. Where the more than 1 million Muslims know that they belong. Not just in the 5 boroughs of this city, but in the halls of power. No more
Will New York be a city where you can traffic in Islamophobia and win an election? This new age will be defined by a competence and a compassion that have too long been placed at odds with one another. We will prove that there is no problem too large for government to solve and no concern too small for it to care about. For years, those in City Hall have only helped those who can help them. But on January 1st, we will usher in a city government that helps everyone. Now, I know that many have heard our message only through the prism of misinformation. Tens of millions of dollars have been spent to redefine reality and to convince our neighbors that this new age is something that should frighten them. As has so often occurred, the billionaire class has sought to convince those making $30 an hour that their enemies are those earning $20 an hour. They want the people to fight amongst ourselves so that we remain distracted from the work of remaking a long broken system. We refuse to let them dictate the rules of the game anymore. They can play by the same rules as the rest of us. Together, we will usher in a generation of change. And if we embrace this brave new course, rather than fleeing from it, we can respond to oligarchy and authoritarianism with the strength it fears, not the appeasement it craves. After all, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. We will hold bad landlords to account because the Donald Trumps of our city have grown far too comfortable taking advantage of their tenants. We will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. We will stand alongside unions and expand labor protections because we know, just as Donald Trump does, that when working people have ironclad rights, the bosses who seek to extort them become very small indeed. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. When we enter City Hall in 58 days, expectations will be high. We will meet them.
A great New Yorker once said that while you campaign in poetry, you govern in prose. If that must be true, let the prose we write still rhyme, and let us build a shining city for all. And we must chart a new path, as bold as the one we have already traveled. After all, the conventional wisdom would tell you that I am far from the perfect candidate. I am young, despite my best efforts to grow older. I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. And yet, if tonight teaches us anything, it is that convention has held us back. We have bowed at the altar of caution, and we have paid a mighty price. Too many working people cannot recognize themselves in our party. And too many among us have turned to the right for answers to why they've been left behind. We will leave mediocrity in our past. No longer will we have to open a history book for proof that Democrats can dare to be great. Our greatness will be anything but abstract. It will be felt by every rent-stabilized tenant who wakes up on the first of every month, knowing the amount they're going to pay hasn't soared since the month before. It will be felt by each grandparent who can afford to stay in the home they have worked for, and whose grandchildren live nearby because the cost of childcare didn't send them to Long Island. It will be felt by the single mother who is safe on her commute and whose bus runs fast enough that she doesn't have to rush school drop-off to make it to work on time. And it will be felt when New Yorkers open their newspapers in the morning and read headlines of success, not scandal. Most of all, it will be felt by each New Yorker when the city they love finally loves them back. Together, New York, we're going to freeze the... Together, New York, we're going to make buses fast and... Together, New York, we're going to deliver universal... Let the words we've spoken together, the dreams we've dreamt together, become the agenda we deliver together. New York, this power, it's yours. This city belongs to you. Thank you. तो नाज़रीन, आप देख रहे थे अभी नौमंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी ने जो है वो ख़िताब किया है और उनकी जानिब से कहा गया कि वो सोशलिस्ट भी हैं, वो मुस्लिम भी हैं और इस बात पर उनको फ़ख्र है। और उनकी जानिब से कहा गया कि मुखालिफिन की हर बात का जवाब अपने काम से देंगे, हम काम करके दिखाएंगे और जो न्यूयॉर्क है उसको एक बेहतर जगह बनाएंगे रहने के लिए। न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का ख़ात्मा कर दिया। ज़ोहरान ममदानी ने कहा न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई जगह नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे और आवाम के साथ मिल के काम करेंगे। हम लीडरशिप के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं, ज़ोहरान ममदानी की जानिब से कहा गया। और इस पर हमने ये भी देखा जो वहाँ पर मौजूद हाज़रीन थे उनकी जानिब से उनको बाकायदा सपोर्ट किया जाता रहा और उनकी हर बात को जो है उसको अप्रीशिएट भी वो करते दिखाई दिए। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहाँ वर्किंग क्लास आसानी से रह सके, ज़ोहरान ममदानी की जानिब से ये कहा गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने खौफज़दा करने वालों को आज जवाब दे दिया है और अभी आप देख सकते हैं कि उनकी जो फैमिली है, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो वहाँ पर उनके साथ मौजूद है स्टेज पर। और इसके अलावा
वो तमाम जो उनका मैनिफेस्टो है उसके हवाले से भी उन्होंने ब्रीफ़ किया है जो वहाँ पर मौजूद हाज़रीन है उनको। और हमारे साथ जो हुआ सियासत नहीं, सियासत अब होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आवाम को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दूँगा। ज़ोहरान ममदानी ने अपने ख़िताब के दौरान जो तमाम उनके पहलू हैं जिसके मुताबिक उन्होंने इस क़यादत को संभाला है और जिसके मुताबिक उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ और पॉलिटिकल जर्नी को लेकर चलना है, उस पर उन्होंने रोशनी डाली। न्यूयॉर्क में औरसी सियासत का खात्मा कर दिया, ज़ोहरान ममदानी की जानिब से कहा गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम जो है वो बराबरी और मसावात पर यकीन रखते हैं और इसी को लेकर आगे चलेंगे। और जो वर्किंग क्लास है, जो सैलरीड क्लास है, जो मेहनत करने वाला तबका है, उनके हकूक़ का हम बिलखसूस ख्याल रखेंगे और उनको साथ लेकर चलेंगे। 1 जनवरी को न्यूयॉर्क मेयर के ओहदे का हलफ उठाऊँगा, ज़ोहरान ममदानी की जानिब से कहा गया। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहाँ वर्किंग क्लास आसानी से रह सके, ये उनकी जानिब से कहा गया है। और ये बात जो है वो अपने शुरू से ही जब वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे उसमें बात बारहा कहते रहे और इसी को उन्होंने अपना पॉलिटिकल स्लोगन भी बनाया। और आज खौफ को शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई है। ज़ोहरान ममदानी की जानिब से ये कहा गया, हमारे साथ जो हुआ वो सियासत नहीं, सियासत अब होगी। और उन्होंने जो अपने सियासी हरीफ हैं उनको भी इनडायरेक्टली जो है वो मुखातिब किया है और उनको बताया है कि अब जो न्यूयॉर्क में है वो नए तर्ज़ सियासत को वो लेकर आने लगे हैं और एक नया दौर सियासत का शुरू होगा। न्यूयॉर्क के अवाम ने साबित कर दिया इक़्तिदार उनके हाथ में है, ज़ोहरान ममदानी की जानिब से ये कहा गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में औरूसी सियासत का खात्मा कर दिया है और अब जो इस्लामोफोबिया है उसकी भी कोई जगह नहीं है और हम सब जो हैं वो मिलकर रहेंगे और जो आम लोग हैं उनकी फलाह व बहबूद के लिए भी काम किया जाएगा। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई जगह नहीं, हम लीडरशिप के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी ने अपने ख़िताब के दौरान ये सारी बातें कही। उन्होंने मज़ीद कहा, 1 जनवरी को न्यूयॉर्क मेयर के ओहदे का हलफ उठाऊँगा। ज़ोहरान ममदानी नौमुंतखब मेयर हैं और उनके जो उनकी जीत है उस पर जो उनके मुखालिफ जो खड़े हुए थे और जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार थे उनकी जानिब से भी उनको मुबारकबाद दी गई है। हमने खौफज़दा करने वालों को आज जवाब दिया, ज़ोहरान ममदानी की जानिब से अपने ख़िताब के दौरान ये भी कहा गया। इसके अलावा आपको ये बताएं कि ज़ोहरान ममदानी 1991 में युगांडा में पैदा हुए और उनके वालिदैन का ताल्लुक भारत से है। ममदानी की फ़िल्म साज वालदा मीराना नायर ऑस्कर के लिए नामज़द भी की जा चुकी हैं और वालिद महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और आपको इस सारी सूरत हाल के वाले से बता रहे हैं कि सर ट्रंप को ये बड़ा धचका लगा है। ज़ोहरान ममदानी का वर्किंग क्लास एजेंडा कामयाब, अमरीकी सदर और एलन मस्क के मुखालिफत के बावजूद पहले मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब। सर ट्रंप ने आज़ाद उम्मीदवार और न्यूयॉर्क के साबिक मेयर एंड्रू कोमो की हिमायत की ताहम उन्हें शिकस्त से दो चार होना पड़ा। फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले ज़ोहरान ममदानी 48,06,741 वोट हासिल कर कामयाब रहे। उनके मद्दे मुकाबिल एंड्रू कोमो को 3,96,177 वोट मिले। रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा सिर्फ 79,281 वोट हासिल कर पाए और अब उन्होंने अपनी विनिंग स्पीच दे दी है जो आपने GNN की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा भी की। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके, हमने खौफज़दा करने वालों को आज जवाब दे दिया। ज़ोहरान ममदानी की जानिब से ये सारी बातें उनके ख़िताब के दौरान कहेंगी और उन्होंने इस बात को भी वाज़ेह किया कि अब न्यूयॉर्क में और जब सियासत की जाएगी पूरे अमेरिका में, उसमें एक नया तर्ज सियासत दिखाई देगा और जिन्होंने उनका सपोर्ट किया है उनका उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। हमारे साथ जो हुआ वो सियासत नहीं, सियासत अब होगी, ज़ोहरान ममदानी की जानिब से ये कहा गया। इसके अलावा उन्होंने ये बात भी वाज़ेह की कि वो सबको बराबरी के साथ लेकर चलने पे यकीन रखते हैं और वो यकीन रखते हैं कि जो मैसेज हैं, जो आम आवाम हैं, जो आम लोग हैं, उनकी फ़लाह और बहबूद के लिए काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे पहले उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि जो पुराना तर्ज़ सियासत है उसमें जो चंद अशराफिया थी उनको लेकर चला जाता था और उनके इंटरेस्ट को देखा जाता था, जबकि अब जो मेरा तर्ज़ सियासत है वो कुछ इस तरह से होगा कि जो सैलरीड क्लास है, जो लेबर क्लास है, जो आम तबका है, जो आम लोग हैं, उनकी फलाह बहबूद पर बात की जाएगी, उनके लिए काम किया जाएगा और न्यूयॉर्क को एक बेहतरीन जगह बनाया जाएगा आम लोगों के लिए भी, आम शहरों के लिए और सब के लिए। और वो बराबरी और मसावात पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ और अब इस्लामोफोबिया जो है उसकी कोई जगह नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब आप देखेंगे कि न्यूयॉर्क में और अमेरिका भर में जहाँ जहाँ हमारे उम्मीदवार कामयाब हुए हैं वहाँ पर एक नया तर्ज़ सियासत दिखाई देगा। हमारे साथ जो हुआ वो सियासत नहीं, सियासत अब होगी। और इस हवाले से अगर हम ओवरऑल बात करें तो सर ट्रंप को भी इस मामले में बड़ा धचका लगा है। सर ट्रंप ने अगर हम बात करें तो एक बिलवास्ता धमकी आमेज़ गुफ्तगू और धमकी आमेज़ बयान भी जारी किया था और उन्होंने कहा था कि अगर ज़ोहरान ममदानी मेयर मुंतखब होते हैं तो जो फ़ंड्स की रसाई है उसमें जो है थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं
और उन्होंने कहा कि अगर एक कम्युनिस्ट जो है वो इक़्तिदार में आता है तो फ़ंड्स जो है वो ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा अगर आप फ़ंड्स दिए जाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल थी, जिसके बाद मेयर का इंतखाब हुआ। बिलाखिर ज़ोहरान ममदानी जो है वो मेयर मुंतखब हो गए और अब उन्होंने अपनी विनिंग स्पीच भी दे दी है। और देखना ये है कि न्यूयॉर्क में इसके बाद की जो सियासी सूरत हाल है वो क्या करवट लेती है, क्योंकि सदर ट्रंप को धचका लग गया और ज़ोहरान ममदानी ने वर्किंग क्लास एजेंडा अपना कामयाब करवाया है। अमरीकी सदर और एलन मस्क की मुखालिफत के बावजूद पहले मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब हो गए। सदर ट्रंप ने आज़ाद उम्मीदवार और न्यूयॉर्क के साबिक मेयर एंड्रयू कोमो की हिमायत की, ताहम उन्हें शिकस्त से दुचार होना पड़ा। फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले ज़ोहरान ममदानी 48,06,741 वोट हासिल कर कामयाब रहे। उनके मद्दे मुकाबिल एंड्रयू कोमो को 3,96,177 वोट मिले और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा सिर्फ 79,281 वोट हासिल कर पाए। आपको बता रहे नाजरीन कि ये सारी सूरत हाल है जिसमें उन्होंने अपनी विनिंग स्पीच भी दी है और मुखालिफत के बावजूद उन्होंने अब कामयाबी समेटी है, जिसके बाद उन्होंने अपनी स्पीच दी और उसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि उनका एजेंडा क्या होने जा रहा है और किस पॉलिटिकल एजेंडे और मैनिफेस्टो के मुताबिक उन्होंने वहाँ पर काम करना है। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई जगह नहीं, ज़ोहरान ममदानी की जानिब से कहा गया। और इसके अलावा उन्होंने अपने मुखालिफिन को भी इस बात से तंबीह की है कि अब जो पुराना तर्ज़ सियासत है उसकी न्यूयॉर्क में कोई जगह नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने 1 जनवरी को न्यूयॉर्क मेयर के अहदे का हलफ उठाऊंगा, ज़ोहरान ममदानी की जानिब से कहा गया। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। ज़ोहरान ममदानी ने कहा, हमने खौफज़दा करने वालों को आज जवाब दे दिया है। तो नाज़रीन, ये अमेरिका की सियासत में एक नया मोड़ है, एक नया बाब रकम हुआ है, जिसमें नए जो ये मुंतखब हुए हैं मेयर न्यूयॉर्क के, वो एक मुसलमान शख्सियत हैं और इसके अलावा उन्होंने फ़लस्तीन की सपोर्ट में भी बारहा बयानात भी दिए और कि उस फ़लस्तीन कॉज को सपोर्ट भी किया है। और इसके बाद उन्होंने ये कामयाबी समेटी है। हमने देखा कि जो वहाँ पर मौजूद पॉलिटिकल क़यादत थी और मुख्तलिफ पॉलिटिकल लॉबीज़ थी, उनकी जानिब से थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ी जब इन्होंने इलेक्शन कैंपेन चली ज़ोहरान ममदानी ने। इसके बावजूद उनका जो एजेंडा था आम लोगों की फ़लाह के लिए काम करने का, वो वहाँ पर कामयाब रहा है और वो नामुंतखब मेयर हैं इस वक्त। उन्होंने अपनी विनिंग स्पीच दे दी है जिसमें उन्होंने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं है और अब सब बराबरी मसवात के साथ चलेंगे और इस्लाम भी इसी बात का दर्स देता है। और उन्होंने वाज़ेह किया कि इससे पहले जो तर्ज़ सियासत रहा है उसमें तमाम जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती थी वो मैसेस को छोड़कर जो कुछ लोग हैं और कुछ एलीट लोग हैं उनके इंटरेस्ट को ज़्यादा तरजीह दिया करते थे। और अब ये तर्ज़ सियासत मज़ीद नहीं रहेगा। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहाँ वर्किंग क्लास आसानी से रह सके और ये जो वर्किंग क्लास की फ़लाह के लिए काम करने का एजेंडा है, इसने बज़ाहिर उनको कामयाब करवाया है और उनकी कामयाबी ने जो है वो आज खुलकर उसका इजहार भी कर दिया है और उन्होंने विनिंग स्पीच में अपना जो मैनिफेस्टो है उसको मज़ीद वाज़ेह कर दिया है। सदर ट्रंप को एक बड़ा धचका लगा है और ज़ोहरान ममदानी का वर्किंग क्लास एजेंडा कामयाब। अमरीकी सदर और एलन मस्क के मुखालिफत के बावजूद पहले मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब हो गए हैं और मुखालिफत के बावजूद सदर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की मुखालिफत के बावजूद उन्होंने कामयाबी समेटी है, जो उनके लिए एक यकीनी तौर पर एक बड़ी फतह के तौर पर सामने आ रही है। Dettol with germ defense.